हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सबको मैं तहे दिल शुक्रिया देता हूं कि इस टाइम पे राइट आप सब लोग जुड़ रहे हैं मुझसे। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू कम टू लाइव राइट नाउ to discuss some of the important tips or strategy which you must keep in mind before appearing this year prelims exam। तो ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि अब केवल 1 वीक बचा है। ओनली 1 वीक इज लेफ्ट। आज टुडे 18th मई और इट इज अ संडे। नेक्स्ट संडे 25th मई इस टाइम तक आपका भाग्य का फैसला हो जाएगा, या आप मेंस परीक्षा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। सो आफ्टर राइटिंग द बोथ एग्जाम्स प्रीलिम्स 2025 जीएस पेपर 1 एंड सी सेट, 6 बजते बजते ये क्लियर हो जाएगा। इट विल बी वेरी क्रिस्टल क्लियर whether you are qualifying to write mains exam or you have to prepare for 1 more year, या 1 साल और आपको मेहनत करने की जरूरत है। So I thought like let's come tonight and discuss certain points which you must keep in mind before going to exam hall next Sunday। कुछ बातों को ध्यान में रखना है। अब बहुत जरूरी बातें मैं बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान में रखना है क्योंकि ये आपको मदद देगा प्रीलिम्स के दौरान। और अभी 1 वीक का टाइम है। यू हैव 1 वीक टाइम। बिलीव मी, यू हैव सफिशिएंट टाइम टू रिवाइज। आप लोग रिवाइज कर सकते हो। यू कैन रिवाइज सेवरल टाइम्स एंड नाउ यू नो डू और डाई। नाउ यू आर जस्ट in a very stress mode, and what I believe many would have been panicking right now। right, कुछ लोग अभी पैनिक कर रहे होंगे। right, so I wanted to share certain important inputs so that you are confident in the exam hall, and there are people who have joined through Zoom session also, so I can talk to them. I can understand their mind. If they ask something, I will be able to reply. At the same time, people who have joined through YouTube channel, they can also interact with me. Now, first thing first, which I would like to just add here. First paper, GS paper 1. So now it is high time now. So prelims 2025. Now, if you look at previous 3-4 years question papers, right? I will now divide into chunk, and these 7 days you have to focus on those topics. अभी 1 हफ्ते में आपको वैसे टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना होगा। आई एम जस्ट डिवाइडिंग द चंक्स हियर। First chunk is here, which I'm connecting together geography, which 2 areas. One is a physical geography, and in this one both world and Indian geography, and also particularly physical geography, India and the world. This is very very important. You know that if you look at question paper, continuously questions are being asked, right? About different landforms, right? Waterfalls. Now it is giving more deeper way of our question there. And in this context, mapping becomes very important. Maps. See, you all have been preparing for so long. आप लोग पिछले 1 साल से 2 साल से पूरे जमकर तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं जाना है, right? You don't have to go into depression, and don't be scared. Just revise it.
But this year exam, one important game changer, which most of the students are neglecting. I'm now pointing out there, human economic geography. Human economic geography. This will be a kind of a game changer in this year exam. So all of you who are watching right now, you have 7 days, particularly NCRT. NCRT class 11th and 12th, human economic geography. Waterways, roadways, ports and harbors, right? Agriculture, economic development, which are linked with geography. Please do it. कृपया करके आप इस 6 दिन from Monday onward 6 days थोड़ा ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी के जो भी आपके पास नोट्स हैं थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए. 3 to 4 क्वेश्चंस. यूपीएससी इज वेरी स्मार्ट. ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी की कोई बात नहीं कर रहा है. Nobody is talking about human economic geography. And my dear students, right now, all of you who are watching right now, if you are able to this coming 5 to 6 days, go to important topics of human economic geography, I'll tell you, this will give you an edge in the competition. Please do it. Now, in this context, I will connect two areas. I'm connecting two areas which you have to revise with all the facts which I'm writing here. One is this one, economic survey and budget. See, you are reading economic survey, budget separately, right? For economics and all this. But see there, which all geographical concepts are there linked with the development part, which is given in union budget and economic survey. आप ये देखिए कि इस बार का द प्रेजेंट इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट में क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स है, क्या क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से लिंक्ड है, खास तौर पर ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी से. प्लीज मेक श्योर आई एम ब्रिंगिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू. मैं जो भी बता रहा हूं इसको नोट डाउन कर लो आप. 5 days 6 days है टाइम. एंड सेकेंड हियर, इंडिया ईयर बुक भारत 2025 जो है, इंडिया ईयर बुक, इसका जो समरी जिस्ट, दोनों के समरी जिस्ट को जो भी सोर्सेस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मटेरियल्स कंपाइलेशन मैगजीन्स है, प्लीज डू इट. योर 6 to 7 questions are from here. And not only economy, government schemes and programs, but also connect with geography. Particularly, I am emphasizing again and again human economic geography linked with the government programs, policies, schemes, which is given in the India Yearbook and Economic Survey. Now, plus in this one, connect environment, which include important topic of biodiversity, climate change, and pollution. I can give you your 25 questions are from here. 25 questions matter a lot. 25 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है. अगर आपने 25 क्वेश्चंस को कम से कम अगर आपने 20 क्वेश्चंस भी सही कर लिए, 40 मार्क्स. 20 क्वेश्चंस करेक्ट,
you're going to get 40 marks. Geography will be somewhere around 15 questions. Environment ecology will be again around 15 questions, 30 questions. Economic survey and all this मिला के वो मैं मैप कर रहा हूँ around 25 question minimum, right? There you can make an edge in the competition. ये आपको edge देगा. And particularly ये जो area है, and then what I said, both the area, geography and environment, the mapping part. And from environment perspective, you know, national park, sanctuary, Ramsar sites, wetlands of international importance, current affairs, जो भी न्यूज में रहा है, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, करेक्ट, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स, PHS, all such important areas linked with rivers, mountains. And in my previous sessions and in my classroom programs, right, whenever I am in the classroom, offline classes, I've been telling all these areas. Connect them. Your 25 to 30 questions are here. And certain areas of economic survey, see, economic survey itself will cover 6-7 questions. India yearbook itself will cover 4-5 questions, but there will be few questions connected with environment and geography. That I'm trying to bring here. So here I'm also connecting here plus mapping. ये जो 5 दिन है, 6 दिन है, do it. Please do it. This is going to help you out, right? This is really going to help you out there. ये आपको बहुत मदद देने वाला है. अब मैं आपको ऐसे टिप्स दे रहा हूं, ऐसे एरिया दे रहा हूं, थोड़ा सेलेक्टिव रीडिंग करना है. यू हैव टू डू वेरी सेलेक्टिव रीडिंग. बट लेट मी टेल यू, दिस इज गोइंग टू गिव यू एन एज. ये आपको एज देगा. एंड 5 दिन में आपने ये सारे टॉपिक्स, विच एवर मटेरियल यू हैव, विजन IAS और विच एवर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, राइट, यू हैव अ मटेरियल विथ यू. कोई भी मटेरियल जहां भी ये सब कवर कर रहा है, प्लीज डू इट, राइट, एंड कनेक्ट विद ज्योग्राफी, विद एनवायरनमेंट, मैपिंग पार्ट. And there, in this context, what I would like to add here, every coaching institute material is full with species in news, places in news, right? Please do that one. So in this context, here, mapping part which comes, another thing is this one. Whichever YouTube channel, right, whichever material you are following right now, protected areas, I mentioned biodiversity heritage sites could be a question. Then wetland Ramsar sites, they generally ask in the exam. Then conventions, important conventions. Repeatedly, I've been telling all this one there. Conventions in news, treaties and conventions. Like, you know, CBD, Nagoya Protocol, Cartagena Protocol. Then UNFCCC, Vienna Convention, right? Then UNCCD, whatever convention in environment. And not only environment conventions, other conventions in the news may be connected with other areas of GS. बाकी GS के एरिया से जो कनेक्टेड ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस है, उसको भी आप पढ़िए. जैसे प्लास्टिक ट्रीटी, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी कैन बी इंपॉर्टेंट देयर. फिर यहां पर इसके अलावा जो है लॉज, एक्ट्स, बिल्स, राइट, रूल्स इन न्यूज. कई बार गवर्नमेंट, you know, revise the rules like plastic management rules, right, biomedical management rules, electronic waste management rules. Please make sure from current affair materials you go through those rules and the facts properly, right? Those rules and facts, please do it properly, because it is now 5 days, and believe me, you don't have to panic. You don't have to go under stress.
just these areas will cover 4 to 5 to 6 questions in this year exam. स्पीसीज इन न्यूज में एक क्वेश्चन आता ही है. प्रोटेक्टेड एरियाज में नेशनल पार्क, सेंचुरी, वेटलैंड, टाइगर रिजर्व या जो भी चीजें हैं. अब जैसे मैंने एक एरिया अभी हाईलाइट किया, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ये मिल जाएगा आपको करंट अफेयर मटेरियल में, बीएचएस. फिर इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज, आईबीएज, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, एमपीएज. प्लीज डू इट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. आप इसको फोकस करो. आप लेट्स डू दैट वन प्रॉपरली देयर. देन जो जो एक्ट्स, बिल्स, रूल्स न्यूज में है और जो भी आपके पास कंपाइलेशन है, मटेरियल्स है, please go through it, revise there. And as what I said here, this one, economic survey, budget. See, one area you are looking from geography and environment from government perspective, but economic survey and budget itself has other areas of GS, general studies. तो ये चीज को इसमें ध्यान से पढ़ना है, जो न्यूज में रूल्स, पॉलिसीज. देन अगेन पॉलिसीज, न्यू पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, initiatives of different departments and ministries in news. और इसका सबसे बड़ा अच्छा सोर्स है, यू नो दैट, पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का कहीं भी कंपाइल मटेरियल मिल जाए. पीआईबी अपडेट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज. ठीक है, आप मिल जाएगा, ये सारे अवेलेबल हैं. मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में मैंने प्रीलिम्स एक्सप्रेस को शेयर किया है. अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं हो, प्लीज गो टू माय टेलीग्राम चैनल, नीरज नचिकेता साइंस टेक एनवायरमेंट. आई हैव ऑलरेडी कंपाइल्ड, मैंने इंडियन एक्सप्रेस का लास्ट ईयर मई से लेकर अब तक का जो है, मैंने उसको मर्ज करके फाइल शेयर किया है, वेयर यू हैव all these prelims tidbits and all those kind of things are there, right? Please make sure to go through it. So this is another area which will cover your 10 to 15 questions, right? 10 to 15 questions will be covered. Now, third very important thing which I am now bringing here, तीसरा चीज जो अभी 5 से 6 दिन में करना है. अब मैं स्टैटिक एरिया पे जा रहा हूं. ये तो कुछ डायनेमिक एरियाज को मैंने बताया. इस बार ये भी याद रखना, डिजास्टर मैनेजमेंट में कुछ जैसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, लैंडस्लाइड, वो ज्योग्राफी से लिंक करके पूछेंगे. लेट मी राइट हियर. जो डिजास्टर मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स हैं, जो कि न्यूज में रहा है, उसको लिंक करना है, लिंक टू ज्योग्राफी, particularly Indian geography and environment. जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, लेट मी गिव एग्जांपल. आज से 2-2.5 साल पहले सिक्किम का जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ था, ग्लेशियर लेक आउटफ्लोज, उसको ज्योग्राफी से, ग्लेशियर से लिंक करके पूछा जाएगा. सो प्लीज मेक श्योर दैट you have done that thing from geography and environment and disaster management perspective. Objective type question can be asked. You know, last year, Wayanad, landslide in Wayanad, you know, many people died in that landslide. Again, landslide linked with geography, heavy rainfall, difficult terrain, right? So UPSC will take that event, that ask objective type question from that perspective of environment and geography. Properly करके जाना है. फिर dust storm, right? Dust storm and all those things which are linked with climate change impacts, global warming and climate change impacts, उसको अच्छे से करके जाना है. Are you getting my point? Right? तो which I am now talking about, ये चीज को करना बहुत जरूरी है. जो जो मैं अभी पिन पॉइंट कर रहा हूँ, 5 days 6 days बहुत टाइम है. यू हैव सफिशिएंट टाइम. 10 घंटे 12 घंटे ये सब टॉपिक्स को हम अच्छे से करना है. राइट नाउ which I'm saying here, art and culture.
is another game changer. आर्ट एंड कल्चर पे लिंक विद एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, वो पूछते पूछते अभी हाल में क्या हुआ है, यू नो दैट एनसीईआरटी बुक हैज बीन रिवाइज्ड मिडिवल टाइम्स, मिडिवल टाइम दे हैव रिवाइज्ड द एनसीईआरटी बुक्स देयर. प्लीज मेक श्योर कंपाइलेशन आर्ट एंड कल्चर, अभी बुक नहीं पढ़ना है, नितिन सिंघानिया या कोई किताब नहीं पढ़ना है, साइड करो, नोट्स एंड करंट अफेयर के जो मैगजीन्स में जो आर्ट एंड कल्चर्स है, डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट का आ चुका है, डू इट. लद्दाख, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, सिक्किम, अदर स्टेट्स, साउथ, cultural aspect, do it properly, right? And again, इसको कनेक्ट करना है एंशियंट एंड मिडिवल, लाइक यू नो हमेशा हर साल क्वेश्चन आता ही है एंशियंट इंडिया और मिडिवल इंडिया को आर्ट एंड कल्चर से लिंक करके. प्लीज रिवाइज इट. सी यू हैव ऑलरेडी रिवाइज्ड, आपने पहले से रिवाइज किया हुआ है, नाउ अगेन रिवाइज इट. फैक्ट्स को याद करो आप, अभी टाइम है 5-6 दिन रटने का, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को रट जाओ, मेमोराइज करो आप. जो बजट में, इकोनॉमिक सर्वे में करंट एस्पेक्ट दिया है वो सब पूरा करना है आपको, दैट यू हैव टू डू इट. तो दिस अनदर थिंग, चंक यू हैव टू डू इट नाउ दिस कमिंग वीक, ठीक है. नाउ बिकॉज अब क्या है, यूपीएससी मॉडर्न इंडिया से शिफ्ट कर रहे हैं एंशिएंट एंड मिडिवल और कल्चर हिस्ट्री, जो आर्ट एंड कल्चर वाला एरिया है, तो इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है. ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट. पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, कनेक्टेड विथ करंट एस्पेक्ट, जो न्यूज में रहा है, like you know appointment of chief justice of India, CGI, judicial reform, right, election process, parliamentary working of India, all those acts, new amendments, खास तौर पे जो है इसमें जो बिल्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, एक्ट्स हैं, राइट. जुडिशरी पे हर साल क्वेश्चन आता है. और एक चीज और इंडियन पॉलिटी में क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बिफोर इंडिपेंडेंस के जो ब्रिटिश टाइम, ब्रिटिश रूल, विच एवर द इंपॉर्टेंट एक्ट्स वर ब्रॉट, इवन उस पर कम से कम एक पर तो क्वेश्चन आता ही आता है. तो जो रेगुलेटिंग एक्ट्स हैं बाय ब्रिटिश इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, प्लीज गो थ्रू इट. Constituent Assembly, drafting of constitution, and all those areas. And recent times, current affairs, last 3-4 years, important amendments to constitution, right? Important bills passed by the parliament, process of bills, money bill or other kind of bills, acts, judiciary, right? Citizenship, all those things which you have been reading from Indian polity book and also current affairs magazine compilation, please do it. उसको अच्छे से कर लो आप. अभी अभी जो इस कमिंग वीक है, इस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करो आप. आपका यहाँ पर नहीं तो सी इंडियन पॉलिटी का लगभग 18 से 22 क्वेश्चन पूछे जाते, 18 से 22 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी में आता ही आता है. और ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो रेकरेंट टॉपिक्स, रिपीटेडली हर साल पूछते हैं, तो उसको करना है. देन कमिंग टू इकोनॉमिक्स, जितने भी इसमें डेवलपमेंट हुए हैं, इन करंट एस्पेक्ट, लिंकिंग बैक टू द बेसिक्स, whether it's a banking industry, you know, some part I have already said in the beginning of my session that you can connect with geography,
human economic geography, but other parts, whatever reforms, whatever core concept, RBI, banking, right, industry, agriculture, sectoral kind of thing there. And you have to connect with economic survey. This has to be connected with, right, economic survey and budget. Even global economy like IMF, International Monetary Fund, right, World Bank. Now, right now, Indus Water Treaty that was in the news, India and Pakistan, Indus Water Treaty and that part. तो उस केस में जो इंटरनेशनल टाइप ऑफ थिंग्स है और जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट लिंक्ड है, इवन पाकिस्तान took 1.1 billion dollar a loan from IMF. All those processes which are like tariff, Donald Trump, American president, imposing the tariff, अभी ये काफी न्यूज में है और इस पे क्वेश्चन आएगा इस बार एग्जाम में. Now it is blaming India, China for heavy tariff. In this context, WTO, World Trade Organization, right, becomes very very important. ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो. एंड WTO में खास तौर पे वहां बॉक्स है, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स. So UPSC will go into the concept, right? UPSC will ask the concept based question. तो WTO को पढ़ के जाना, arbitration, mediation process, what are different boxes, tariff, trade, because that is now making headlines, right? So वो बहुत important, global economic perspective में बहुत important है. Sometimes reports, reports, international reports, economic angle पे, some reports from within the country, Indian economy kind of reports, which are there in the news, sometimes indices, right, human development index or any such new index where ranking of India, direct question, even sometimes factual question, you'll get there. तो वो सब चीज को ध्यान में रखना है कि ऐसे चीजें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है. फिर यहाँ पर जो रेगुलेशन वगैरह आता है कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट कर रही है, क्या क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में, क्या क्या स्कीम चलाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या है, क्या क्या प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, ये सब जो इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है उसको थॉरोली अभी जो करंट अफेयर्स का मैगजीन या कंपाइलेशन है उससे आपको पढ़ना है. यू हैव टू रीड इट थॉरोली राइट नाउ. 5 days 6 days you can do it. अराउंड इकोनॉमिक्स से भी अराउंड 20-25 क्वेश्चंस रहते हैं एंड बहुत सारे करंट एस्पेक्ट जुड़ा होता है. मेनी थिंग्स आर लिंक्ड विद करंट एस्पेक्ट. तो प्लीज मेक श्योर यू आर एबल टू डू इट, राइट. मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, उसमें पब्लिकेशन, न्यूज़पेपर, जर्नल, मूवमेंट, वो सबको करना ही है. बट एंशिएंट, मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर, रिवाइज इट. ठीक है. पॉलिटी अगेन, रिवाइज इट. ऑल दिस स्टैटिक एरिया, core concept, revise it, linking with current affairs in this coming week, right? Now coming to science and technology, environment I have already mentioned there. Science and technology is very very dynamic, the subject which I teach. इसमें मैं कुछ चंक्स बताता हूं जिसको इस बार ध्यान से पढ़ के जाना है और जो भी आपके पास करंट अफेयर मटेरियल्स है उसको रिवाइज कीजिए आप. So what I'm now coming here in this part, so I'm dividing into the areas. The first, emerging technologies, quantum, AI, big data, right, autonomous vehicles, जो भी ऐसे नए टेक्नोलॉजीज हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, AI, right, all such areas which are emerging technology areas. Bullet train, maglev train, hyperloop, right, all such areas. ये मैंने पिछली बार जूम सेशन के थ्रू मैंने बताया भी था और क्लास में मैंने पढ़ाया है. क्वांटम, all those areas. This is one chunk. 2 से 3 क्वेश्चंस यहां पर रहेंगे, 2 to 3 क्वेश्चंस. तो प्लीज मेक श्योर टू रीड दैट. Second, very very important here,
communication technology, ICT and communication technology, and that is linked with governance. Pre-space optical communication, Line 5, Ladakh, Sonam Wangchuk. In my offline classes, I have taught all this one. That first time, world's tallest tower, mountain top tower, and with the beam of laser light, where the broadband connection was provided there. Starlink, Elon Musk, SpaceX, Starlink project, OneWeb project, right? Communication network, cloud computing, right? Other emerging areas like edge computing. This all I teach in my offline classes are there. और मैंने बताया था मेरे YouTube चैनल में ऑलरेडी उसमें कई वीडियोस हैं जो मैंने लास्ट ईयर बनाए हैं, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को वहां पर दिया हुआ है. So in the same channel, what you are watching right now, go to the playlist, go to the topics of the videos, and I have already covered such kind of concepts with application facts there. That becomes very important. Third area which you will focus, biotechnology. Current affairs magazine, biotech and health के जो टॉपिक्स हैं पूरा उसको रिवाइज कर रहा है. बायोटेक्नोलॉजी हर साल 2 से 3 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं. और हेल्थ से डिजीज, मंकी पॉक्स, जीका, नीपा वायरस, ये सब मैंने बताया. ऑल करंट अफेयर मैगजीन कवर्स दैट. Please make sure you are going to go through that one, right? Now you know that India first time genome edited rice, genome edited rice, CRISPR-Cas9, right? Gene editing tools, and first time India has produced genome edited rice. That was in the news. De-extinction, bringing back extinct species back to life. Conservation biotechnology, DNA fingerprinting, all those core concepts, along with the biotechnology initiative by DBT, Department of Biotechnology, right? These are all there in the compiled material. Please go through it. You already have material with you. Just go through it with the class notes. Now what I'm coming here, apart from this, the another chunk, very important, space and astronomy. अगर आपने ये 4 प्रोमिनेंट टॉपिक को अच्छे से कर लिया, आपका 8 से 10 क्वेश्चन यहीं पर है. 8 to 10 questions are here, which you can easily solve. Space technology, ISRO mission, Gaganyaan, Chandrayaan 3, Chandrayaan 4 we are planning, Mangalyaan. Then apart from ISRO mission, XPOSat, X-ray polarimeter satellite, NISAR, NASA ISRO synthetic aperture radar, ये सब मैंने पढ़ा है, and is all there in my YouTube channel also. All those areas, revise it. And not only ISRO, ISRO, private participation, SSLV, small satellite launch vehicle, new generation launch vehicle, NGLV, right? GSLV Mark 3, LVM3, RLV, Pushpak. ये सब मैंने cover किया है. All I have covered in my classroom programs and various kind of current affairs sessions all over India. So please make sure from whatever material you have, read it. आप उससे पढ़ो आप, है ना? Please go through it. Very very important I am talking about right now. ये बहुत important है जो मैं यहाँ पर एरिया हाईलाइट कर रहा हूँ. 5 से 6 दिन में आप अपने तकदीर को बदल दोगे. You'll change your destiny. और ये मुमकिन है. ये जो टॉपिक मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो भी मटेरियल आपके पास है, आप उस पर लग जाओ, पढ़ना चालू कर दो. Start reading it. ठीक है? तो अनदर एरिया है. एंड द लास्ट विच आई वुड लाइक टू ऐड हियर, इसी में आता है ये चीज, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर रिएक्टर, बट न्यूक्लियर बॉम्ब. अभी पाकिस्तान का पता है, बार बार थ्रेट दे रहे थे कि हम इंडिया पे अटैक कर देंगे, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह. तो न्यूक्लियर वेपन्स, राइट? देन missiles, drone, anti-drone technology. DRDO, Defense Research Development Organization. We have Akash Tir, S-400
Triumph missile system, what goes Sudarshan Chakra. We can intercept. We have very strong interception capability. Drone interception, drone neutralization, anti-drone system. And during this time, India, Pakistan, this time, we have showcased our military strength. हमने अपने जो मिलिट्री शक्ति का जबरदस्त प्रदर्शन किया है. आज इंडिया न्यूक्लियर और डिफेंस में बहुत स्ट्रांग कंट्री है. ब्रह्मोस मिसाइल, even Navy was there in this war, right? Our aircraft carrier Vikrant, INS Vikrant, right? Even submarine, nuclear powered submarine Arihant, Arighat, even Scorpion submarine, Vakshir, INS Vakshir, Vagir, Vela, Scorpion class submarines from France, Rafale, even Air Force was there, Rafale, 4.5 generation. लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया कि इंडिया का 5th जनरेशन कौन सा है. सो रफेल, डसॉल्ट रफेल, all military technology from PIB and current affair materials thoroughly. Last year even it was asked, military exercise was asked. And nuclear technology, nuclear weapons, nuclear reactors, use of nuclear technology in medical science, agriculture, environment. मैंने ये सब टॉपिक्स अपने क्लास में पढ़ाया है. I have taught all of them. Please make sure to read. And the last, renewable energy. Energy part of new renewable energy and those areas, right? Even conventional energy. And this year, geothermal power, Ladakh, solar and wind, now wind power, offshore wind energy. We have a policy we are implementing, Kanyakumari, Rameswaram, Gujarat. Solar, already UPSC has asked so many questions. But you have to read that. Solar, but wind, geothermal, tidal, right? Biomass energy, even conventional power plant, ultra mega power plants, right? New technology, clean technology, cleaner technology, coal gasification, clean technology, whatever comes in current affairs, hydrogen, National Green Hydrogen Mission. Already UPSC has asked 2 years question on hydrogen, hydrogen CNG, green hydrogen, but all other use of new areas there. Energy is a very, very important topic. Whether you talk about nuclear power, conventional energy, traditional power generation, hydropower, small hydropower, thermal power plant, new technology in the thermal power plant or fossil fuel and whatever, plus renewable. Ocean forms of energy, OTEC, ocean thermal energy conversion, very important. I've been telling this all in my classroom program. And core areas will remain core areas. You cannot now skip that. You have to do it. Connected with current affairs. So 5 days, I have given you 5 important things to remember. I'll again repeat there. जो लोग अभी लेट ज्वाइन किए हैं, मैं फिर से एक बार दोहराता हूं. Geography, physical geography, but give importance to human economic geography. Economic survey budget, India yearbook, environment, biodiversity, climate change, pollution, and then mapping part. Then next I've said places in news, species in news, protected areas in news, protected areas like tiger reserve, elephant reserves, all those kind of. Then conventions in news, treaties and conventions, acts, bills, rules in news, policies, program initiatives in news, PIB updates. Then disaster management aspect in news linked to geography environment, like landslide, Wayanad landslide, glacial lake outburst, all such areas, cyclones, art and culture with ancient and medieval India, and then important areas from modern India. Then Indian polity connected with current aspect, news, bills, amendment, acts, important core concept, articles of Indian Constitution. Then economy, developments in current aspect, that economic survey budget, reports, indices, regulation measures, government schemes, programs, and also WTA, World Trade Organization, tariff, IMF, international monetary aspect, international trade aspect from economic aspect, current aspect there. Then science and technology, engineering, emerging technologies, quantum, cloud, nano, robotics, AI,
big data, right? Hyperloop, all such emerging areas. Laser, communication, then communication, IT, biotech, health, space, astronomy, renewable energy, nuclear and defense. This is रामबाण. इसके जो टॉपिक्स हैं उसको फोकस करना है. And now the last but not the least, but the most important thing, CSAT. ये नहीं क्वालिफाई किया तो आपका जीएस बेकार. इसको नहीं क्रॉस किया, लक्ष्मण रेखा. आपने जीएस में बहुत अच्छा भी किया होगा, बट यू आर आउट ऑफ द रेस. क्योंकि सबसे पहले सीसैट का इवैल्यूएशन होता है, और जो लोग कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, मतलब द 1/3 क्वालिफाइंग मार्क्स जो लोग क्लियर कर लेते हैं, उनके जीएस पेपर 1 इज इवैल्यूएटेड, एंड देन बेस्ड ऑन द मिनिमम कट ऑफ जीएस पेपर 1 people are selected for mains answer. So my dear students and aspirants, 5 days. अब मैं आपको रणनीति देता हूँ, स्ट्रेटेजी देता हूँ. What is your strategy here? 3 chunks are there. Reasoning, quantitative aptitude, and reading comprehension. These are the 3 main pillars of CSAT, and you have to get more than 66 marks, 80 question, 2.5 marks. आपका टारगेट है कि 200 मार्क्स में से आपको 100 तक पहुंचना है, बस क्वालिफाई करना है. जबकि लक्ष्मण रेखा कितना है? 1/3 है, 66.67, यानी कि 67 मार्क्स है. आपको लक्ष्मण रेखा के पास नहीं रहना है, 100 का टारगेट रखना है. keep a target of 100 marks, right? So now if you look at here, 45 minutes, divide the chunk. Reading comprehension, 45 minutes and 30 minutes. You are already practicing through CSAT test series. 2 घंटे के टाइम को आप 3 पार्ट में डिवाइड करो. वो डिपेंड करता है आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज में. What is your strong area? It depends on that, whether you are strong in quantitative aptitude or reasoning or reading comprehension. Make sure when you are attempting CSAT paper, वो सेकेंड हाफ होता है आफ्टरनून, आप थके हुए होते हो, दिमाग टायर्ड होता है क्योंकि आपने रात भर ढंग से सोया नहीं, टेंशन में रहे हैं, एंड देन पहला पेपर जीएस पेपर 1 के बाद दिमाग एग्जॉस्ट हो चुका है. तो इज अ वेरी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग, राइट? It's very difficult and challenging that CSAT second half, right? After so much of your strenuous mental use in GS paper 1 and also not having enough sleep and tension and all those kind of things. But again, you have to qualify at any cost. 45 minutes, क्योंकि रीजनिंग का एक एरिया है जो आप इजिली सॉल्व कर सकते हो. You have practiced very well, you can easily solve that reasoning question. So make sure 45 minutes, try to solve as many as possible, minimizing the mistakes. सबसे बड़ा गड़बड़ होता है जहां मिस्टेक करने के बाद स्कोर नीचे चला जाता है, the score goes down. Reading comprehension, 45 minutes, but there, make this one single passage first and then multiple passages, जो कि 3-4 पैसेज वाले होते हैं, पैराग्राफ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ, उसको बाद में रखना है. You know, CSAT में single paragraph, single passage, try to solve that one first. And you all know these are all connected with the GS, and what UPSC is doing over the years, they're asking a lot of environment passages. Last year there were a lot of environment passages were there, and I have done a live session of the analysis of CSAT paper of last year. That is also in my YouTube channel. आप मेरे चैनल में जाएंगे तो वहां पर लास्ट ईयर का जो सीसैट पेपर हुआ था उसके लिए मैंने लाइव सेशन मैंने किया है, और उसके वीडियोस है. वहां पर मैंने पूरा बताया था कितने कंप्रिहेंसिव पैसेज, कौन कौन सब्जेक्ट एरिया से है. इन्वायरमेंट में पूछ रहे हैं कभी,
ऐसे ऐसे एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिंगल पैसेज फर्स्ट, देन मल्टीपल पैसेज, जो जो बड़ा कॉम्प्रिहेंशन होता है, जहां पर 3 पैसेज या 3 पैराग्राफ्स होता है, 3 पैराग्राफ्स या 2 पैराग्राफ्स, जो लेंथियर होता है वो लास्ट में करना है। पहले सिंगल पैराग्राफ वाला को करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल पैराग्राफ क्वेश्चंस, राइट? And since you know multiple choice question, don't make any over assumption. What is given in the passage, read between the lines. So 45 minutes, because there are a lot of passages which can give you marks to cross the Lakshman Rekha. Reasoning, which you can easily manage. Difficult part is this one, quant. अगर आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड नहीं है और आपका क्वांट में उतना अच्छा नहीं रहा है, बिलीव करो आप एग्जाम हॉल में कितना भी सर पटक लोगे, मैथ सॉल्व होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। तो वहां ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। यू डोंट हैव टू स्पेंड टू मच ऑफ टाइम, राइट? बी स्मार्ट स्टूडेंट। 2 घंटे में आपको लक्ष्मण रेखा क्रॉस करना है, 67 मार्क्स से आगे ले स्कोर करना है। कहीं भी गलती से कोई भी क्वेश्चन में ज्यादा ट्रैप में फंसना नहीं है। टाइम ज्यादा लग रहा है इसका मतलब आप उसमें क्लियर नहीं हो, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है। टाइम अगर ज्यादा लग रहा है, स्किप इट, छोड़ दो, छोड़ दो वहां पर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ट्रैप जो होता है ना कि नहीं अब हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेट मी ट्राई लेट मी ट्राई, अब पता चला 10-15 मिनट वहां निकल गया एक क्वेश्चन में। अगर कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन 2 से 3 मिनट में नहीं होता है, skip it. If you're not able to solve in 2 to 3 minutes any quant question, maths question, is better go to those questions which you can solve it. Maximize your strength areas, strong areas in CSAT, not your weak areas. Are you getting my points? अपने स्ट्रेंथ पे खेलो, वीकनेस पे नहीं। तो मैथ्स में जो एरिया, लेकिन नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम पे हर साल क्वेश्चन आता है। अभी 5 दिन बचे हैं, 5 डेज, नंबर सिस्टम को प्रॉपर्ली रिवाइज करो, नंबर सिस्टम्स एंड ऑल दिस, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आना है। ये 3 एरिया तो मैं अभी लिस्ट करूं, नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, 4-5 क्वेश्चन तो वहां होना ही होना है। और मैथ्स में आपको सारा 80 क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व करना है ना, यू डोंट हैव टू सॉल्व 80 क्वेश्चंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यू हैव टू जस्ट गेट 67 and above. You have to get 100 marks, that's it. Why I'm talking 100 marks? You will be confident that I am qualifying CSAT. Even if there will be some kind of mistakes, some wrong answer, but still you will be above 67 marks, right? But if you keep target 67 marks and you only do the attempt that much, तो पता चला कि 67 में भी आपने टारगेट रखा, उतना ही क्वेश्चन सॉल्व किया और उसमें बहुत सारे गलत हो गए, यू आर आउट, यू आर आउट ऑफ द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। डोंट डू दैट। मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना है, रीजनिंग को अपना बेस बनाना है, right? Let's say suppose there are 30 questions, at least try to solve 15 to 20 questions on reasoning. Reading comprehension, let's say another 30 questions, try to solve 20 questions into this, right? Maths, let's say 20 questions, I'm just giving you an idea, 20 questions, and you're not good in maths, even 5 to 7 questions kafi hai. Try to get up to 10 questions correct, but even if you attempt 10 questions, 5 to 6 correct, done, done, टेंशन नहीं लेना है। एंड टाइम मैनेजमेंट, कहीं भी ज्यादा टाइम लग रहा है, 10 मिनट तो डेंजर। अपने आप को रिमाइंडर डालते रहो, टाइम लग रहा, घड़ी को देखते रहो, ठीक है? प्लीज मेक श्योर you should not get trapped with any particular question, any 3 segment. Getting my point here? Are you all getting there? Qualify करना है, and then GS paper 1.
चक दे, है ना, वो काम करना। क्लियर हियर? ऑल आर क्लियर हियर? ओके, आई विल नाउ डू द इंटरेक्शन पार्ट। मैंने बता दिया क्या क्या करना है, and those who have joined late right now, this video will be is there in the channel, so you again go back and see that. Ajab, Saurabh Singh has joined, then Sanat Kashyap is there. Sanat, I am good. How are you, Sanat? Okay, then Saurabh, how are you, Saurabh? Good there. And all those people who have joined by Zoom. Okay, so I'm looking at your doubt also there. If you have anything to ask, you can ask me. कुछ पूछना है? See, I have given my number, and remember that this देवघर IAS Academy दिया, अभी हम लोगों ने मॉक टेस्ट कराए थे. वी हैव डन द मॉक टेस्ट आल्सो, राइट, एंड many students have appeared in the free mock test. We will be also starting our mentorship program for mains exam and also for test series and answer writing practice. So here, please call, contact if you want to talk to me during this coming week. I am available. 9162 500 508, right? ऑनलाइन भी कोर्सेज अवेलेबल है. इट्स अ हाइब्रिड मोड, ऑफलाइन विथ ऑनलाइन. We have mobile app and everything. You can go visit our website also there. At the same time, Deoghar IAS Academy is also offering the mains program, right, at affordable fees. So we'll have now mains mentorship program. Soon after prelims exam, we'll start this. Then again, test series program. All of you, even anywhere in India you are there, you can join this program. Then mains answer writing program. This all will be started just after prelims exam at a very affordable fees. At the same time, essay, very, very important for UPSC mains exam, essay module. Then again, ethics module. Abhimanyu sir's ethics module is will be a very another important thing which you can do there. Then my modules, science and technology, environment, GS3 paper module. All this will be available just after prelims exam. And even those who want to join our PCM batch, prelims cum mains batch 2026, even our admissions are going on. So there also we can join that. दिया के प्लेटफॉर्म में आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ बाइलिंगुअल क्लासेस होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों के हैं, और वेबसाइट में आप जाएंगे सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, प्लस साथ साथ में सब कुछ इसमें अवेलेबल है. और हम लोग मेंस टेस्ट सीरीज अभी हमने प्रीलिम्स का कराया है, बहुत सारे बच्चों ने मॉक दिया भी है, उम्मीद है कि उसके रिजल्ट भी आएंगे इस बार, राइट. देन ये मेंस आंसर राइटिंग, ऐसे मॉड्यूल, एथिक्स मॉड्यूल, ये सारी चीजों को, GS3 पेपर, ये सब हम लोग स्टार्ट करेंगे. सो यू विल बी गेटिंग ऑल अपडेट्स, ठीक है. और अफोर्डेबल फीस में आप देवघर में, झारखंड में नहीं जा सकते, ऑनलाइन कर सकते हैं. एंड वी हैव ऑल द प्लेटफॉर्म, एवरीथिंग बिल्ट देयर, राइट, दैट यू कैन गेट देयर, एंड यू विल गेट ऑल द कांस्टेंट सपोर्ट. सो फर्स्ट नाउ फोकस ऑन द प्रीलिम्स, ट्राई टू क्लियर द प्रीलिम्स, ठीक है. प्रीलिम्स को क्लियर करो, आप जी जान लगा दो. तो मैं एक चीज पे यहां पर हाईलाइट करूंगा, दैट टू शाइन like sun, first burn like sun. This is the quotation given by Dr. APJ Abdul Kalam. डॉक्टर कलाम ने ये बात कहा है कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो आपको सबसे पहले सूरज की तरह जलना होगा. आप पिछले 1 साल 2 साल 3 साल जब से आप तैयारी कर रहे हो,
आप तप रहे हो, मेहनत कर रहे हो। अब समय आ गया है लास्ट 1 वीक, अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदना है। लाइक अभिमन्यु, यू हैव टू विन एंड कम आउट। अभिमन्यु तो फंस गया था चक्रव्यूह में, लेकिन आपको फंसना नहीं है, बाहर निकलना है। 1 वीक में अपने आप को जला दो, बर्न इट लाइक एनीथिंग। 12 आवर्स, 14 आवर्स, 15 आवर्स, खाना पीना सोना सब भूल जाओ दिस वीक, कमिंग वीक। और अपने आप पे भरोसा रखना है कि जो चीज आप पिछले 1.5 साल 2 साल से आपने पढ़ा है, मेहनत किया है ना, वो आपको पता है, आपने टेस्ट दिए, प्रैक्टिस किए, इट इज देयर, वो आपके साथ है। टेंशन नहीं लेना है। टेंशन नहीं लेना है। कभी भी टेंशन की बात है तो मुझे याद कर लेना। स्माइल, मुस्कुराइए, ठीक है। ऑलवेज कीप दैट स्माइल ऑन योर फेस। आई नो दैट सेइंग दिस इज वेरी सिंपल, लेकिन आप पे क्या बीत रही है मैं महसूस कर सकता हूं। मैं भी वो दौर से गुजरा हूं। I've also gone through that kind of phase. I can understand what type of situation right now you are. आप किस स्थिति पे हो मैं समझ सकता हूं, महसूस कर सकता हूं। अपने आप को कोशिश करो, try to be calm, revise it, revise it, revise it, right? And I'll share the same PDF in my Telegram channel. तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में सेम पीडीएफ जो मैंने लिख के बताया है, व्हाट आई हैव डन इन द यूट्यूब चैनल, तो मैं आई एम नाउ शेयरिंग इट, ठीक है। आप मेरे टच में रहो, वी आर देयर टू हेल्प यू। DI is there for help. DIA, देवघर IAS Academy is for you. आप बिल्कुल हेजिटेट मत करो, एंड आई एम देयर फॉर यू। यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है और हौसला बुलंद रखना है, राइट। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड जो लोग नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे, प्लीज गेट कनेक्टेड विथ अस, ठीक है। और इवन आफ्टर द एग्जाम आप अपना जी जान लगाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है, कुछ समथिंग है, तो गेट बैक टू अस। हम लोग BPSC, JPSC, बाकी जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जहां पे GS के पार्ट आते हैं, सारा कुछ CSAT, मैथ्स, सब कुछ हम लोग करा रहे हैं देवघर में, राइट। इज नॉट ओनली UPSC एग्जाम बट ऑल्सो स्टेट PCS एग्जाम, BPSC, JPSC, BSSC, JSSC, SSC, CGL, जहां जहां GS का पार्ट आता है वो सब वहां कवर हो जाता है UPSC प्रिपरेशन। इट ऑल गेट कवर्ड इन द UPSC क्लास and definitely you will get somewhere there. So don't worry, whatever your aim, give your best, and whatever Almighty God has decided, the destiny. But other exams, keep on writing, maybe the other exam you will qualify, right? So 1 week, give the best, and whatever happens on 25th night, right, then take a decision कि what is the next step you require. 25 के रात में आफ्टर एग्जाम हो जाने के बाद फिर आप उस पर फिर से सोचिए कि अब आपको क्या करना है, कौन कौन सा एग्जाम देना है, कहाँ कहाँ क्या करना है। UPSC की तैयारी को जारी रखना है, मेंस की तैयारी करना है, अगले साल देना है, वो सब कुछ 25 की रात को कीजिए आप। 25th नाइट यू टेक द डिसीजन, एंड इन एनी पार्ट ऑफ दैट डिसीजन आई एम देयर विथ यू, द एंटायर DI इज विथ यू। उस दौरान 25 की रात में आपका होता है तब भी हम लोग हैं आपके साथ, मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए। जहां नहीं भी हो रहा है, कुछ भी दिक्कत है, बाकी क्या आपके रणनीति होनी चाहिए, उसके लिए भी मैं हूं और पूरी दिया की टीम है, राइट। सो प्लीज बी इन टच विद अस। सो डोंट वरी, लगा दो जी जान, जो होगा सो होगा, आर या पार, आर या पार।
And don't worry, give your best, right? So I will be regularly coming to my YouTube channel and also Diya channel and all this. Diya is everything is, you will find that. हमारे वेबसाइट जाइए, करंट अफेयर्स का जाइए, सोशल मीडिया जाइए, यू विल गेट एवरीथिंग देयर. और आप मेरे टेलीग्राम में हो तो यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग देयर. मैंने अभी हाल ही में कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हैं अपने टेलीग्राम में. प्लीज गो देयर एंड डाउनलोड इट and revise it. I've already given some on that. So thank you, Sanath, for your well wishes, and I look forward to your support, right, of whatever initiative I am doing. All right. So all the best. Do well. Thank you. Jai Hind. Jai Bharat. Chak de India. Do it. And ये exam simple होगा. I'll tell you, this exam will be simple. It will not be difficult. You can easily do it. Doable है. हर साल लोग निकाल रहे हैं ना, उनके रैंक्स आ रहे हैं ना, तो आप क्यों नहीं कर सकते? It's doable. People are qualifying and getting ranks. You can also do it. Whatever I have given the idea, just follow that in this coming week. All right. So thank you everyone, and I thank on behalf of Diya, Devar IAS Academy. Remain connected. We will go ahead with that. All right. Thank you. Take care. Good night. Bye bye. Thank you.